Hello everyone. Namaste, namaste. Welcome to Upskill with Abhishek. And those who are listening us in the podcast or watching or going to watch in the YouTube channel, I welcome all of you. Today we have a new guest with us, Dhiraj Ahuja, amazing personality, a chartered accountant by qualification, and huge amount of experience. 23 years of experience in the field of banking, insurance, business process outsourcing, and also currently working on building amazing recruitment partner network in the form of Skill Connect. So, Dhiraj, welcome to the show. Namaste to everyone, and thank you so much for having me, Abhishek. Yeah. Dhiraj, I think I'm going to go to the first question, one point for conversation is today we see a lot of new advent happening in the field of AI, um, and the evolution is sort of changing into how we can automate things. And since you are in the area of building skills for people, you are bringing the right people in the ecosystem to give India that impetus to be skill nation. Correct. So, what is that you're doing? How you're going to contributing to make Bharat or India upskill through your ventures, through your initiatives? That's an excellent question to begin our conversation with, Abhishek. I just want to, as a process check, do you want this completely in English or Hindi? What's your audience like? We will mix it in English, Hindi. I'm okay if you want to continue in Hindi or English, both ways. Perfect. Because it's Bharat, then I think it will be good in Hindi because then a lot of people can understand. Huh? Let's do ठीक that. है. ठीक है. So we'll keep it mixed. So basically, Abhishek, Skills Connect is an endeavor from my side to ensure that हमारे देश में जितने भी छोटे बड़े शहरों में जो यंगस्टर्स एस्पायर कर रहे हैं अपने आप को देश में स्किल होकर के किसी न किसी तरीके से या तो एंटरप्रेन्योर बने या किसी अच्छी नौकरी में जाकर के वो काम करें, उनको ढूंढना, उनको स्किलिंग की तरफ पुश करना ताकि उनके अंदर आज की डेट पे जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो अपना सकें और उसके बाद एक अच्छे एम्प्लॉयर के साथ उनको मिलवाना ताकि वो वहाँ पे जॉब प्रॉस्पेक्ट करके अपना करियर शुरू कर सके। या अगर वो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो ऐसे स्किल एक्वायर करें जिससे कि वो अपनी मनचाहा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकें और अपने अंडर बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकें। तो हमारा ये कोशिश है कि स्किल्स कनेक्ट के जरिए हम उन सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उन सारे कॉलेजेस या उन सारे जॉब कंसल्टेंट्स जो मार्केट में यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कुछ ना कुछ कोर्स करने के लिए या कोई ना कोई अच्छी जॉब ढूंढने के लिए या उनको ट्रेन कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, हम उन सबको अपने साथ जोड़ें। सो उसका फायदा क्या होगा? उसका 2 या 3 जगहों पे बहुत बड़ा फायदा होता है। सबसे पहले और सबसे बड़ा फायदा तो यंगस्टर्स को होता है क्योंकि आज की डेट पे जब लोग बीकॉम कर रहे हैं या 12th के पास अपना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या लेट्स से इवन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये आती है कि कौन सी जॉब उनके लिए फिट है और उस जॉब के लिए क्या वो स्किल रेडी है या नहीं। तो हमारे इस इकोसिस्टम के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वी गिव दैट नॉलेज दैट व्हाट इज इट दैट विल मेक यू सक्सीड टू गेट दैट जॉब और व्हाट आर दो स्किल्स जिसके बेसिस पे आप एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो हम 1-on-1 देते हैं। So unlike other job platforms where you go register, apply, and then wait for a response, we actually 100% cases talk to every candidate and ensure that that person is guided, whether he is fit or not fit, and if he is not fit or she is not fit, then what training that person needs to undergo. And then we provide training as well, again through our partners, because we have lots of training institutes, lots of courses that we have which we can suggest. So it's a continuous improvement cycle. Somebody comes, applies, we assess. If the assessment is clear, he's pushed into the job. If he's not, then put into a training, and then he again apply. So this is the biggest benefit of any individual job seeker which is coming into our ecosystem because of this network. The second biggest beneficiary we have seen are the training institutes or job consultants, क्योंकि उनके पास बच्चे आते तो हैं लेकिन प्लेसमेंट्स में वो हमें स्ट्रगल करते हैं। और इसी तरीके से जो जॉब कंसल्टेंट्स हैं जो छोटे साइज के हैं या मीडियम साइज के हैं, उनको अच्छे एम्प्लॉयर्स नहीं मिलते या अगर मिल जाते हैं तो एम्प्लॉयर से जवाब नहीं मिलता या पैसा टाइम पे नहीं आता, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। तो हम उनको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छे जॉब्स, अच्छी कंपनीज में जो जॉब्स हैं वो उनको मुहैया करवाते हैं और उन्हीं के बच्चों को हम फिर जॉब पे लगवा करके टाइमली पेमेंट करवा करके उनके बिजनेस को भी आगे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स अ सेकंड बेनिफिशियरी ऑफ आवर बिजनेस मॉडल। द थर्ड बेनिफिशियरी आर द एम्प्लॉयर्स, बिकॉज हमारे एम्प्लॉयर्स को
हमारे इस इकोसिस्टम के माध्यम से बहुत ही अच्छे ट्रेंड और सबसे इंपॉर्टेंट विलिंग कैंडिडेट मिलते हैं। हमने ये देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स या बहुत सारे जॉब सीकर्स सीरियस नहीं होते, सो दे कीप विंडो शॉपिंग, दे आर इन अ जॉब and they keep applying at many places, and if a call comes, they try, they negotiate, but they don't join. So हमारे ecosystem के through we are able to push only the right and the most qualified candidates to the employers. तो employers के लिए time to hire आधे से भी कम हो जाता है, और उनकी जो ज्वाइनिंग रेट है और उनकी जो रिटेंशन रेट है ज्वाइनिंग के बाद, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू एनी अदर सोर्स दैट दे आर करंटली यूजिंग, वेदर डायरेक्टली सर्चिंग थ्रू प्लेटफॉर्म्स और सोर्सिंग थ्रू अदर जॉब कंसल्टेंट्स। तो हम अपने इकोसिस्टम के माध्यम से ये तीनों बेनिफिशियरी को ये वैल्यू ऐड करते हैं, और इसी वजह से जो हमारा स्किल्स कनेक्ट का जो इकोसिस्टम है वो ऑर्गेनिकली ग्रो होकर के आज काफी एम्प्लॉयर्स को, काफी जॉब सीकर्स को और काफी जॉब कंसल्टेंट्स और इंस्टीट्यूट्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है। नो, आप ये तो बहुत बहुत अमेजिंग बात बताई आपने कि किस तरीके से एक पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करना, जो हायर कर रहा है, जो हायर हो रहा है, उसको भी उस लायक बनाना कि वो वहां जाके काम कर सके। आई थिंक इससे बहुत बहुत इनिशिएटिव है धीरज। और मुझे मालूम है कि जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड वी आर फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो किस तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी कैसे अपने स्किल को कंटिन्यू प्रोफेशनल एजुकेशन के माध्यम से तैयार रखना होता है कि भाई नए रिस्क, नई ऑडिटी कौन सी है, उनको कैसे हम ऑडिट करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड्स कैसे बेहतर होंगे कि हम कर सके। तो आई थिंक वो आपको माइंडसेट करता होगा इस पूरे इक्वेशन को बनाने के लिए। 100%. In fact, I graduated in 1996 in my CA, so that's like long time back. But I think what I realized within the first 5 or 6 years of my jobs, when I started working for banks and insurance companies, that even as a chartered accountant, you can't sit on your past achievements. आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। एंड मैं लेट 90s एंड अर्ली 2000 में भी, जब ये इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और उसके बाद 2007-8 में जब सोशल नेटवर्क्स हिट होने शुरू हुए, और उसके 5 साल के बाद जब ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से बढ़ी हुई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातचीत शुरू हुई, तो मैं वो सब बहुत क्लोजली स्टडी कर रहा था। क्योंकि आप जब अपने कॉलेज टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएट के स्किल एक्वायर या नॉलेज एक्वायर करने के बाद अपनी जॉब शुरू करते हैं, तो कई बार आप एक रट में चले जाते हैं और सोचते हैं कि यही है और इसमें ही अब जिंदगी बितानी है, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो वर्ल्ड है, इट्स चेंजिंग ड्रामेटिकली फास्ट at a fast pace, which many people are not able to fathom. So it is very important for any professional or even a normal graduate to not just spend time on internet in surfing or on social media in entertainment, but I think they should spend a lot of time in looking at what technologies are coming, and more importantly how those technologies are impacting our lives and businesses. तो मैंने वही किया, और करीबन 2008 से लेकर 2000 लेकिन आज भी आई कंटिन्यूली केप्ट ऑन ट्रैकिंग के कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, कौन सा डिजिटल ऐप आ गया है जिससे कि बिजनेस को इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और धीरे धीरे मैं अपने कन्वेंशनल सीए के रोल के साथ साथ एक बिजनेस लीडर के रोल में भी नेचुरली ट्रांसफॉर्म होता गया, और धीरे धीरे मैंने फिर बिजनेस लीड किए काफी इंश्योरेंस कंपनीज में। मैंने कॉल सेंटर्स भी लॉन्च किए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने सर्विस भी किए, सेल भी किए, एंड देन आई मूव इनटू लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक रोल्स। एंड उन सब रोल्स को में जाने से पहले मैंने अपने पहले 6 महीने 1 साल पहले अपने आप को तैयार किया, और उनके बारे में स्टडी करी, कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज भी लिए ऑनलाइन जा करके। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नाउ आई एम रेडी फॉर दोज रोल्स, एंड देन आई वेंट टू दोज रोल्स। तो आज आप देखिए, मैं सीए होने के बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप अपना पूरा रन कर रहा हूँ, व्हिच इज इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वेरी अनरिलेटेड एज यू कैन सी, बट देन आई थिंक सीए एज अ कोर्स prepares you very thoroughly to be very very hardworking, very dedicated to your goals, and those habits forms for life. तो आप अगर ये अच्छी तरीके से क्लियर कर जाते हैं तो आई थिंक यू कैन अचीव द वर्ल्ड इफ यू पुट योर माइंड टू इट। मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ, आई टोटली एग्री विथ यू। मैं तो आपका जूनियर हूँ। मैं नवंबर 2004 में रायपुर से मैंने अपना सीए कंप्लीट किया था, और उसके बाद ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट्स में, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से वी हैव टू कीप अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स, लर्निंग, रीलर्निंग एंड अनलर्निंग थिंग्स, और अपने आप को रेडी रखना। नए रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हमको उससे हैंडल करना है। करेक्ट। मुझे ये पूछना था कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको सुन रहे होंगे, क्योंकि आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज के डेट भारत में मेरे ख्याल से 50 करोड़ से ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, जो बोलते हैं जो डेट 540 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन आउट ऑफ 1.4 बिलियन वो यूथ है। और क्योंकि आप यूथ काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग विद यूथ, एंड आप यूथ को एम्प्लॉयबल बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
एजुकेशन सिस्टम से आप कुछ पढ़ के आ गए और फिर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेंगे और फिर जॉब करेंगे। आज के डेट में तो बिल्कुल पहले दिन से आपको छक्के चौके मारने पड़ेंगे बैटिंग में कॉर्पोरेट्स के साथ। करेक्ट आप करेक्ट। वो काबिल बना रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑफ कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई है, बट आपको लगता है स्टिल जो हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूजीसी है, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम इंडियंस को एम्प्लॉयबल बनाए फ्रॉम द डे वन, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं धीरज? आई थिंक आई कुडंट एग्री मोर अभिषेक। मेरे हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम इज रनिंग एटलीस्ट 20 years behind देन ओ व्हाट द इंडस्ट्री रिक्वायर्स। गॉड। एंड अगर हमारी गवर्नमेंट ने और लोकल गवर्नमेंट ने और इवन एजुकेशन बॉडीज ने इस पे मिलकर के काम बहुत जल्द नहीं किया तो फॉर अ शॉर्ट टर्म वी माइट फेस लॉट ऑफ क्राइसिस। तो नॉट जस्ट इंडिया, आई थिंक इवन अब्रॉड वी कीप हियरिंग अबाउट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के पीछे एक और बड़ा मॉन्स्टर है, वो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि काफी लोग बात नहीं करते। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब बहुत सिंपल होता है कि आप फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है, आप हफ्ते में शायद कुछ दिन काम कर रहे हैं या दिन में आप कुछ घंटे ही काम कर रहे हैं। सो एक कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे 50 करोड़ से ज्यादा यंगस्टर्स हैं, अगर उनकी एनर्जी को, उनके टाइम को हमारी कंट्री और हमारी कॉर्पोरेट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, उनको वो एवेन्यू नहीं देंगी, तो इट कैन लीड टू लॉट ऑफ केओस इन द कंट्री। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए। और आपको पता भी होगा कि लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड इवन सम एशियन कंट्रीज लाइक जापान, कोरिया, दे do a lot of focus during their initial schooling days in identifying people for white collar jobs or blue collar jobs. And उसके पीछे एक कारण ये भी है कि वहाँ पे blue collar jobs और white collar jobs में जो सैलरी डिस्पैरिटी है वो ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। तो एंड बोथ द जॉब्स यू नो आर लुक्ड एट अपॉन एज विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। जबकि हमारी कंट्री में वो अभी भी एक रिस्पेक्ट का जो एंगल है वो उतना नहीं दिया जाता है ब्लू कॉलर जॉब को स्पेशली। वो चेंज हो रहा है जब से आई थिंक 2014 से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बनी है, तब से एक कंसिस्टेंट एफर्ट पड़ रहा है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से व्यू किया जाए और उनके लिए काफी काम किए जाए, और हुए भी हैं। They're also being तो न्यू, यस एब्सोल्युटली, आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर changes are very welcome, but I think we are far away from ensuring that they are. But मतलब, I think the first year of implementation was last year when NEP went into actual implementation. तो आगे आने वाले 1-2-3 साल में चलेगा पता कि उसका इम्पैक्ट क्या निकलने वाला है। But I think a lot needs to be done. ये बहुत है इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं, वो ये भी सोचें कि किस तरीके से एआई और जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं और किस तरीके से जॉब Absolutely. बात हो रही है, किस तरीके से एआई की बात हो रही है कि दे आर यूज एंड हाउ आवर पीपल, not only the way we are called as software exporter to the world, the medicine hub of the world, That's right. we should also give the prompt engineers to the world, Correct. the people who run AI and how they make AI happen. बहुत अच्छी Yes. बात है धीरज। एक मुझे आपसे जो चीज समझनी थी, जो जो बहुत लोग समझना चाहते होंगे, कि ये जो जॉब सीकर से जो जॉब प्रोवाइडर की जर्नी होती है, एक जगह आप केवल जॉब सीख करते हैं, तो कि आप जॉब सीख करते हैं तो आप बहुत डिपेंडेंट होते हैं इकोसिस्टम के ऊपर कि वो आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब दे। और वहीं पे जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, जब आप जॉब प्रोवाइडर बनते हैं, तो केवल आप अपने लिए नहीं, बट ऑफ कोर्स आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप दूसरों के लिए भी एक जगह बनाते हैं। उसमें आपके Correct. क्या, व्हाट्स योर थॉट्स, एंड आपके लिए इसमें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हमारे कंट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और रिसेंटली जब आप देखें एक एमबीए चाय वाला करके कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, राइट। एंड जॉब सीकर की जो मेंटेलिटी है, दैट हैज बीन अ लेगेसी बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड द फोकस ऑफ क्रिएटिंग सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स, और यस। एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड career for like so many decades. I think our country has not done justice to the entrepreneurs, the 5 million odd MSMEs that we have in the country, who provide jobs to the largest number of people in the country. It's a very I would say under recognized sector of the economy, despite it being one of the largest one, right? So मेरे हिसाब से a constant push of what an entrepreneur is and how that entrepreneur can change lives and what kind of incomes that person can earn needs to be kind of communicated, glorified, to create a large army of people who becomes entrepreneurs. And with AI, like you mentioned, I think it will be pushed down our throats in case we don't, start following that kind of an approach.
in my case also, I mean, after serving in jobs for almost 20 years, when I turned entrepreneur, I did not get an approval right away. I mean, I really had to discuss it not only just in my family, but also among my colleagues and friends, and even my seniors, my bosses, who were a little circumspect that, why are you taking such a decision, have a great career and doing so well. But then I think I realized that it's not just my own wish that what I want to do, what is important, but also the larger picture of helping perhaps thousands and lakhs and millions potentially in the next few years of my active career. That the transformation that I can bring. I think वो एक बहुत बड़ा गोल था मुझे अपने आप को डिसीजन लेने में भी. तो मैं तो आपके माध्यम से जितने भी आपके listeners हैं, youngsters or mid career or even senior career professionals, I would urge them to definitely explore entrepreneurship as a very viable career ahead, because I think it allows you to um, uh, basically harness every possible capability that you are nurturing and are not able to demonstrate in your jobs. It allows you to spread your wings and create impacts which you can never do in your job. 100% I can say it with full conviction. And it's not an easy road. It's not for everyone also. But who all think they can do it and are getting held back because of financial reasons or any risk of anything. I think you must do due diligence on your potential, on your opportunities. And आजकल की डेट में बहुत सारे मार्केट में वेंचर बिल्डर्स, बहुत सारे फाइनेंसियर्स, बहुत सारी schemes from government are available which can allow you to launch your businesses. And don't think we have to chase crazy valuation money in and act like a startup. Think of becoming a businessman. Think of 3, 5, 7 years horizon, because each business takes minimum 1 to 2 years to settle. And from third, fourth, fifth year onward, it starts to pay you returns. And then sixth, seventh year onwards, you can seriously start to see very, very big returns because of your efforts and persistence, which a job will never be able to give you, even if you do a math. So my 2 pennies on the table. I think ये तो बहुत अच्छी learnings है for all of us, in fact, including me. Dhiraj, startup ecosystem is doing well now in terms of the growth trajectory they wanted to see, the kind of unicorns they are creating. And और मुझे लगता है कि पिछले जो 10 सालों में स्टार्टअप इंडिया का जो कैंपेन था, डिजिटल इंडिया मिशन, जो डिजिटल इंडिया कैंपेन था, तरीके से उनको अलग अलग माध्यम से जो आपने जो बताया किस तरीके से हाउ द फंडिंग्स आर नाउ अवेलेबल, द सीड कैपिटल इज अवेलेबल, सो दैट दे कैन गो आउट एंड वेंचर आउट. What's your thought, and what do you think still what we need to do good to make that ecosystem live and active so that it can create more entrepreneurs in days to come? So I think I'll address this in 1 or 2 ways. I think the system is fairly mature now. When I say mature, doesn't mean that it has reached its full maturity in terms of very well organized processes and very well engagement touch points. But I think there's enough and more available from government side as well as private side for entrepreneurs to think and help them that whatever their idea on business is, are they right, are they not, and help them in case those business ideas are right. There are a lot of players in the market who can help you not only launch business but arrange funds or help you make your teams and in the initial 1 to 3 years handhold even to help you settle your business into a rhythm, into a momentum. So I think ecosystem wise, I don't need to repeat the facts. We are number 2 in the world in terms of the startup that we have, the unicorns we have, and the growth trajectory. I mean, the whole world is looking at literally. I think Modi ji and his government has been very successful and very fast-paced in turning around the notion about our nation, that how capable we are, and it's like literally making that big elephant we all used to talk in the 90s, 2000 and 2010. They have literally made the elephant rise up and then run fast. So I think there's enough and more. That's a good news for all the entrepreneurs out there. I think second point is choosing the right industry and the right idea, because and my like I said in the earlier question, don't look at startups to build valuation and make quick money and then get exits. Look at startups to build real businesses and absolutely sustainable, profitable businesses. Don't think of burning and then creating some story around customers acquired and then in future will make money from them. While those could be true in certain very hard technical sort of this product perspective, but businesses literally are made from if you have I would say cash in bank
and you're profitable, right? Just sales doesn't mean business, so just be very very clear that आपका जो product idea है, आपका जो service idea है, उसको vet करिए, उसकी market fitment, market acceptability check करिए, और जब आप उसको लॉन्च करें, आपका एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि आप पहले 1 साल में या पहले 6 महीने में और 2 साल में 3 साल में कितना आप लेके चल रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली उसको इवेल्युएट करिए. और देयर आर, इफ यू हैव द राइट business idea and you have the right passion to show to others that you mean business, you are there in it for long and you will make it successful, don't worry, there'll be hundreds of people to come and back you up. ये बहुत जरूरी बात है समझने की कि अगर आपके अंदर उद्यम करने की क्षमता है, you are industrious. Yes. And of course, I have seen that in chartered accountants because they've been groomed like that to be very hard working, and also of course today they are smart working as well. और अगर उद्यम करने की शक्ति है तो आज इकोसिस्टम सफिशिएंट है आपको वो रनवे देने के लिए कि आप वो टेक ऑफ ले सकें. Correct. ये धीरज, हमने देखा था जैसे आपने बताया कि आपने तो बीपीओस भी सेट किए हैं, आपने बड़े बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वर्कफ्लो ट्रांसफॉर्मेशन भी किए हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस में. पहले हम देखते थे कि बीपीओ में गुड़गांव नंबर होता था, बैंगलोर, गुड़गांव, ये सब मुंबई, टॉप 3 सिटीज. देन हमने देखा केपीओज आया, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जहाँ पे आप केवल बिजनेस प्रोसेस नहीं, आप नॉलेज लेवल की भी आउटसोर्सिंग हैंडल करते थे वर्ल्ड के लिए. इंडिया वाज, भारत एक आउटसोर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी था, जहाँ पे सब कुछ बड़े बड़े बैंक्स हो, यूएस बैंक्स हो, वो इंडिया आके अपने प्रोसेस आउटसोर्स करते थे. और आज की डेट पे वो थर्ड स्टेज है जहाँ पे ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं. आपने देखा होगा कि यूएस बैंक्स होंगे या बैंक्स इन जर्मनी, बैंक्स इन Europe, they have their offices in India who are processing knowledge process, as also they are doing shared services across all their entities in the globe. So I Absolutely. think, what is the fourth stage you see? I generally see BPO, KPO and global shared services. Do you see anything coming up next which we should be aware of? Well, I think I would not comment upon the services side, but I see a lot of shifting of real businesses into India. Because that's where the biggest market is, by the way, after China. In fact, we are bigger than China now, as per the last data. So I see a lot of big businesses coming and setting up shop here in India. I even see a reverse migration of not just Indians, but actually the local natives of Western countries into India. You will start to see in the next 5 to 10 years, a lot of foreigners living among us. Like we have gone outside India and worked in Western countries or even Eastern countries or Southeast Asian countries. That's a big trend which I see, especially on the manufacturing side, especially in industries which are going to be powering the infrastructure push not only in India but also globally. We have heard of IMAC, which is the India Middle East corridor. We have heard of how defense industry in India is changing. We are also looking at how manufacturing hub is moving gradually from now China to also India. And one big important thing which we are hearing very recently is on the semiconductor side, and the last is on the agriculture side. So I think these 4 or 5 industry will see not just a very big boost in India, but like I said, I see a lot of action in India where we will see a lot of development and a lot of involvement of human resources globally coming into India and working here. That's the future I see. ये बहुत जिस तरीके की हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, so I think ये सब चीजें जाके एड अप करेंगी in terms of what we do collectively as Bharati, as Indians, and show to the world what we can offer. Correct. Totally. मेरे पास क्वेश्चन और है आपसे पूछने के, बाद उसके पहले हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में आ गए हैं शो के. मेरे पास एक बुक है लीडरशिप के ऊपर. दिस इज बुक बाय गुरुदेव श्री रविशंकर जी. He is the founder of the Art of Living. He has done amazing work on the skill youth development. From page number 1 to 75, any one number you like, I will pick that number and go to that quote today. What is that we have for the leaders? Yeah. You're asking me or the audience? I'm asking you. Any number from 1 20. 20. Okay, so let me go to page number 20 and let's see what's the message for leaders today. So page number 20 talks about for a good manager, it is important to be in the present moment with patience and poise. I'll again repeat. For a good manager, it is important to be in the present moment. वर्तमान में रहना उस लीडर के लिए बहुत जरूरी, उस मैनेजर के लिए जरूरी है. और वो with patience and poise. अगर उसके अंदर धैर्यता है, धीरज, आप तो आपका नाम ही धैर्य है, धीरज है, और ये कोड भी एकदम एप्ट है आपके लिए कि
What's your take? What's your take on this No, particular? I couldn't agree more. I couldn't agree more, Abhishek. And I think it's a very natural thing that in the initial days of your career, initial years of your career, you're very aggressive, very hardworking. You want everything to be done immediately, and you want to do more than what you think you can do. But I think it's the energy which keeps you pushing you that. Yes. But as you grow older and you reach into your mid-career, and then later in the larger part of your career, you realize that patience is something which is very, very crucial for anyone to be successful. And you reflect back, अरे मैंने उस साल में ऐसा किया था, मैंने उस सिचुएशन में ऐसा किया था, मैं अगर वैसे करते तो अच्छा रिजल्ट आ सकता था. And I think this is not taught to us when we are early in our stage. We need to be patient. And linking it to the entrepreneurship and even for startups, I think one thing which is very underrated is patience. That the people talk about financial capital, people talk about technology capital, but I think the patience capital people don't talk about. Businesses don't get built in 1 day, 1 year, 2 years. Businesses take time. It takes hard effort. It also requires good destiny, sometimes luck also. And luck doesn't come every day, every year. So you need to be very, very patient, whatever you do in your life. And I think Sri Ravi Shankar ji, I'm also a follower of him. I did some courses also, some breathing techniques, and it taught me also a lot of things. I was happy doing those courses that a lot of concepts that were taught, many I knew, and I knew it through hard experiences in life. But I was very happy that those are being taught, and those were the validation कि ये जो बता रहे हैं और जो मैंने सीखा जीवन में बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए. तो धैर्य आई थिंक एक फाउंडेशन होती है जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है या पता भी होता है, लेकिन जिसने धैर्य पा लिया तो उसको जीवन में हमेशा सक्सेस तो मैं एक सेकेंडरी वर्ड है, सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, एक जो हैप्पीनेस होती है वो उसको हमेशा मिलेगी. पूर्णता की अनुभूति कि कैसे आप सेटिस्फाई फील कर सकते हैं. दैट्स बहुत राइट, सही. एब्सोल्युटली. धीरज, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि आजकल और मैंने अपने पीएचडी रिसर्च पेपर में पब्लिश भी की रिसेंटली कि जो वर्किंग एम्प्लॉयज है, क्योंकि इसी फील्ड में है, यू वर्क विद पीपल, यू आर पीपल मैन बिकॉज यू क्रिएट एंड कनेक्ट पीपल विद कॉर्पोरेट्स. सो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एस्पेक्ट है वो बहुत मिसिंग पाया मैंने इन माय रिसर्च ऑफ where we want to create people who should be IQ level high. They have their great IQ, they can solve any big algorithms and problem, but when it comes to solve emotions of your team members, they fail. And इसी जॉब परफॉर्मेंस और वेलबींग के एस्पेक्ट में जब प्रूव किया अपने पहले पेपर में, रिसर्च में, जो कि यूजीसी केयर लिस्ट में पब्लिश भी है, लिंक्डइन में भी अवेलेबल है, और हम दूसरे पेपर में भी काम कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द रिसर्च, ये मालूम पड़ा कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा पीछे छूट गया है हमारे इस भागदौड़ के जीवन में. क्या आपको लगता है, डू यू फाइंड एंड वी शुड डेफिनेटली इंप्रूव ऑन दिस? I think there is no future without it, very honestly. And I'm actually a little sad since I'm away from corporate life for the last few years. This EQ concept was raised to me in my early years of job in early 2000 or mid 2000. So I was very happy when I learned that concept at that point in time, and I was hoping that it will gather momentum. And I'm sure a lot of action must be happening in the corporate side. But I think with the advent of social networks and more dependence on people now being on the screen rather than out and about among people and friends, I think that emotional connect has worsened among people who are working. And because everybody is in a rush, everybody wants to jump to their next screen or next pastime on the screen, and ability to connect with people and understand. So empathy आप बात कर रहे हैं, तो empathy as by concept itself is के आप दूसरे के मन की व्यथा और स्थिति को जान करके आप वो चीज बोलें या वो चीज करें जिससे कि जो काम होना है उसके मन की स्थिति के अनुसार और आपके अनुसार हो जाए. तो एम्पैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को समझ में ही नहीं आता एम्पैथी होती क्या है. तो आई थिंक इमोशनल क्वोशंट के बाद तो अब आई थिंक एक सोशल क्वोशंट भी आ गया है जो मैंने सुना है रिसेंटली, और धीरे धीरे और भी नए क्वेश्चंस निकलेंगे. बट आई थिंक विदाउट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस of your own self and of the other, to have a very meaningful interaction and a very let's say outcome oriented interaction are very difficult. तो आपको ये इमोशनल क्वेश्चन के बारे में समझना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. Yeah, I think I totally agree with you. Dhiraj, you have tons of experience, tons of knowledge. You're doing great work. I'll tell you, I could have spent more time with you, understand the great work you're doing.
but I think with the paucity of the time, आपसे Sure. मेरा last question, Dhiraj, before you leave, what are your quick 4 or 5 messages, important message for youth so that they keep themselves up the curve by doing right upskilling? Sure. I think कोई prepared answer नहीं है. I will just share what I generally go through and what I've gone through and realize what mistakes I made. I think number one and the most important thing is you got to be very, very honest. Okay. And honesty doesn't mean when you are talking to people or doing things. I think you need to be honest to yourself. तो आप प्लीज अपने दिमाग के अंदर ये सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप कहाँ सक्षम है, क्या कर सकते हैं, और उस सच्चाई के साथ अपने सारे के सारे प्लान्स, अपने एग्जीक्यूशन जो भी करते हैं वो आप करें. तो आई थिंक ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के बीच में हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है. इंटेग्रिटी इज व्हेन यू आर एक्टिंग और स्पीकिंग ऑनेस्टली व्हेन नोबडी इज वाचिंग. तो जब कोई आपको नहीं भी देख रहा तब भी आप जब ऑनेस्ट बिहेव करते हैं तो देन यू आर रियली ट्रूली ऑनेस्ट. तो ऑनेस्टी जरूर रखिए अपने अंदर. सेकेंड थिंग इज प्लीज, लाइक आई सेड, स्टडी हार्ड एंड कंटिन्यू टू अपग्रेड योरसेल्फ. आसपास क्या चल रहा है और क्या आने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि कहाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने करियर में, पैसा बनाने के एम में, और अपने फैमिली और अपने आप को खुश रखने के एम में, you may struggle or you may not be able to achieve your goals. So that's point number two. Point number three is I would say it's radical, मतलब not radical, rather it's very new, which I've learned in the last 2-3 years. Learn about your own self, your own culture, your own values. आप हम बहुत फॉर्चुनेट हैं जो भारत जैसे देश में हमने जन्म लिया है. आई थिंक काफी सालों तक, दशकों तक हमें ये बताया गया कि हम हमेशा गुलाम रहे, सर्वेंट रहे, लेकिन और हमें हमारे देश के रिच कल्चर, रिच हिस्ट्री और एंशियंट नॉलेज के बारे में बहुत कम नॉलेज है. आप पढ़ें, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ें, मतलब आप उसके बारे में जानना शुरू करें. एंड इट विल टेक यू 2-3 years टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट ऑल इज अबाउट. बट आई थिंक एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है वो एक पीरियड की है और उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जिससे हमको थोड़ी सी हीन भावना ज्यादा आती है कि हमको हमेशा गुलाम बना के रखा गया. जबकि हमारा जो पास्ट है, हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, चाहे वो वेद हो गए, चाहे हमारे भगवत गीता हो गए, चाहे महाभारत हो गए, चाहे रामायण हो गए, आप जब इनको पढ़ेंगे ठीक तरीके से तो आप ये जानेंगे कि हमारा जो नॉलेज सिस्टम है भारत का बहुत प्राचीन है, बहुत थरो है, बहुत साइंटिफिक है. और जब ये आप जानेंगे तो ना सिर्फ नॉलेज बढ़ेगी बल्कि एक सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर आएगी, जो एज अ सिटीजन भारत की एक नागरिक होने के चलते हुए आपको जो एक सेंस ऑफ प्राइड आएगी, वो एक अंदर आपके जो भाव, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, कुछ भी कर गुजरने की जो एक शक्ति पैदा करेगी, वो अनबीटेबल है, आई कैन एश्योर यू. सो ये मेरा तीसरा मैसेज रहेगा. एंड आई थिंक इन 3 मैसेजेस में आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मतलब वे कर सकते हैं, अपना बहुत सक्सेस अचीव कर सकते हैं, बहुत हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं. और मैं खत्म करना चाहूंगा कि सोहनलाल द्विवेदी की जो जो 2 पंक्तियां थी, उनकी जो फेमस पोम है, जो कविता है, जो अमिताभ बच्चन जी ने भी काफी फेमस करी हुई है. मैं बस 2 पंक्तियां उसकी बोलकर खत्म करूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इसमें फिर आगे 2 बड़े छंद हैं जो मैं छोड़ता हूँ समय के ध्यान रखते हुए. बट आखिरी छंद बड़ा अच्छा है जो कि मैं एक मैसेज के तौर में देना भी चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती. सो एंड दिस इज द मैसेज वी ऑल हेयर रेगुलरली इन आवर लाइव्स के डोंट गिव अप. If you fail, learn and then try again and continue till you succeed. So with this, I will end. Thank you so much, Abhishek. बहुत अच्छा लगा, इतना मजा आया, स्पेशली ये जो आपने जो इतनी अच्छी पंक्ति जो कि एक सबको ध्यान रखने योग्य है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, कई बार एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है. बट आई थिंक एक लंबे समय में अगर अपन देखें हम लोग तो सक्सेस उसी को मिलती है जो कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स मारता है. Correct, correct. Dhiraj, एक last point before you leave, because it was very intriguing, very thought-provoking conversation with you. Dhiraj, you met with Prime Minister Modi. आप Prime Minister मोदी से भी मुलाकात किए हैं, तो आपका आपका ऐसा कुछ जो कॉन्फिडेंशियल ना हो, बट क्या लगा आपको उस भेंट से, उस मीटिंग से, और स्पेशली यूथ को जो हम ध्यान रखते हैं, तो कुछ ऐसा पहलू जो आप डिस्कस करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे जो कि सबके लिए हितकर हो, लाभकारी हो? जी, देखिए, मोदी जी हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको देख के, सुन के, उनके कार्यशैली को देख करके हर एक के मन में एक एनर्जी आ जाती है.
तो 1-on-1 तो मिलना इतना नहीं हो पाया था, लेकिन मैं उनके काफी नजदीक उनको सुन करके, उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद दे करके, लाइक एनी अदर पर्सन, एनी अदर यंगस्टर आई वुड कॉल माई सेल्फ, मुझे वो मौका मिला। तो आई थिंक व्हाट्सएप डीपी मतलब में फोटो है, व्हाट्सएप वो डीपी में वो उसके पीछे एक दूसरी कहानी है, वो आपको मैं कभी दोबारा कभी और इसीलिए मैं बताऊंगा। थोड़ा बट आई थिंक वो basically that is not that's actually a DP at what do you call, at the Prime Minister Museum. It's not something which he is sitting in person. It's a digital picture. वो आपके लिए है, that you can maybe decide to continue or keep it. But मैं उनसे वैसे मिला हुआ हूँ क्योंकि 2014 में जब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च हुआ था, तो विज्ञान भवन में जब लॉन्च हुआ था, तो मेरा उनसे मतलब एक थोड़ा सा संपर्क हुआ था। और उसके बाद उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट थे, उनसे मेरी बहुत मीटिंग्स हुई थी, और उनके साथ मिलकर के हमने एनएसडीसी के साथ बहुत काम भी किया है। तो उनकी जो विजन थी उसको लेकर के जो उन्होंने मैसेज दिया मुझे उस समय, और मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, उसको हमने परस्यू किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ, और काफी काम भी किए हैं। उसके बारे में हम एक और चर्चा अलग से भी कर सकते हैं, जिसमें काफी जो मुझे लर्निंग भी हुई इस पूरे इनिशिएटिव, इस मिनिस्ट्री के बारे में, और वो मिनिस्ट्री आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, वो भी मैं आपके साथ कभी आप चाहे तो शेयर कर सकता हूँ। उसको भी काफी सीखे हैं लोगों को सीखने के लिए। But I think I personally admire Modi ji among all the prime ministers we have had so far, and I think every prime minister has played their role during their times for the country. But I think leveraging what are the opportunities that we have as a country, and executing them in more than a startup style and securing results for the country, I have not seen it even in Western side to that extent. So for that, I have full regard for him, and I hope that all of us in our country should hope to have such leaders for next 30, 40, 50 years, and nothing will stop India. भारत की प्रगति कोई रोक नहीं सकता। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। और आप जैसे एंटरप्रेन्योर धीरज मार्गदर्शक बनते हैं और साधन बनते हैं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में और लोगों को सही दिशा देने में। क्योंकि अगर हम और आप एक होकर खड़े ना होंगे देश के प्रगति के लिए, देश के बढ़ोतरी के लिए, और हमारे जो आने वाली जनरेशन उनको गाइडेंस देने के लिए, तो हो सकता है कि ये गलत गाइडेंस के कारण वो कुछ गलत रास्ते में जाके ऐसा करे जो अनप्रोडक्टिव हो और देश को ही हानि करे। तो आई थिंक जब हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, हमारे भारतवर्ष की बात करते हैं, भारत भूमि की बात करते हैं और भारतीयता की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हम कैसे सबके लिए, सबके प्रगति के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए कैसे हम खड़े हो सके और जो हमने सीखा है वो दुनिया को दे सके। और इसीलिए आज जब आपने अपना जो अनुभव शेयर किया लोगों की प्रगति के लिए और जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए, मैं बहुत आभारी हूँ। वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट यू केम, यू टुक आउट टाइम। आई नो यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, बट कभी आपसे पर्सनली मुलाकात करेंगे दिल्ली में, आप जहाँ पे हैं। बट इट इज नाइट कन्वर्सिंग विथ यू, एंड ऑफ कोर्स यू हैव गिवन ग्रेट गाइडेंस टू द यूथ टुडे, स्पेशली द मैसेज दैट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हर बार वो सवेरा एक नई उम्मीद लेके आता है, और आपको उस उम्मीद को कायम रखना है और हर एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि कभी ना कभी आपकी मेहनत रंग लाएगी। और आपकी मेहनत अगर अच्छे उद्देश्य के साथ है और प्रगति के मार्ग में अग्रसर है, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू राइज इवन फ्रॉम द एशेस लाइक अ फीनिक्स। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टू ऑल योर व्यूअर्स वेरी सक्सेसफुल टाइम्स अहेड। थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट विशेस टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडिवर्स। टेक केयर सर। धन्यवाद।